ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः योगेन चित्तस्य पादेन वाचम् आलं शरीरस्य चावदकेन जोपाकरोत्तं प्रभोरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राणजलिरानतस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Ravikam, when it's little warm, gently attach your ball and play. And gently open your eyes. Okay. अच्छा, लास्ट डे हम लोग कौन सा टॉपिक चर्चा कर रहे थे? पेज नंबर कुछ याद है किसी को? স্যার রামায়ণের ওই এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, কিন্তু পেজ নম্বর তো ভুলে গেছি। ओके, आई थिंक द किंग ऑफ लंका, वहां से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. The king of Lanka. With this completely developed yoga superpowers, Ravana, when wrest control of Lanka from his brother and became the ruler of this jewel paradise, once called Saranda Devu, from the Tamil word meaning the most excellent island. The name made its word into the English language as a serendipity, as the sailor magically found this beautiful island in their travel around the Indian Ocean. Ravana's subjects are well taken care of. Lanka's fame is known through the world for its prosperity and happiness. Okay. Ravana's wondrous woman quarters is to be seen, to be believed to, shocked as it is, with the beautiful kidnapped wives of other men. A most peculiar indulgence of his, and would of course lead to his later downfall.
Indeed, this is heaven on earth, an earthly paradise unmatched. जैसे हु इज रावण, रावण के बारे में जब भी हम लोग चर्चा करते हैं तो यही आते हैं कि ही इज द किंग ऑफ लंका। ठीक है। और वो उनका भाई से इसको छीन लेते हैं। ठीक है। और जो तमिल वर्ड सेरंड देवु, मतलब जिसका मतलब मीनिंग है कि कोई एक ऐसा देव जो बहुत चमत्कार से भरा हुआ है। और रावण क्या करते हैं? वो अपना जितना भी प्रजा होते हैं उनका वो बहुत अच्छे से रखते हैं उनको, और सुख एवं समृद्धि के लिए उसको जाना जाता है। और लेकिन उनका एक प्रॉब्लम यही है कि वो दूसरे का पत्नियों को वो हरण करके वो खुद के पास रखते हैं। और उनको बोला जा सकता है कि वो एकदम हम्म, अ, स्वर्ग जैसा है पृथ्वी का। The devas in the actual heaven through the watching with mountainic concern over the developing situation. So they approach Vishnu to take down Ravan, as this alternative heaven might turn out to be a viable competitor to their heaven. So when devas approach Vishnu, they ask him to please in incarnate as a human being on earth and take care of this a problem, because recall only a human being can take down Ravan, as any Rakshasa is generally is strictly a human concern, unlikely Asura who are fair game for devas. जैसे राक्षस वो उसको सिर्फ मार सकते हैं कोई एक मानव, इसीलिए विष्णु के पास जाके देवगण उनके पास आग्रह किया कि आप मनुष्य की तरह वहां पे जाइए और उनको निधन कीजिए। जोगा implication. This usually happens when march down a path of increasing material indulgence at and at some point we have had enough. But there is no easy way out of the predicament we have gotten into. Divine intervention is the only answer. One might question, why does the divine send us the challenges? Why should we be based with Rakshasa in the first place? And that too, why Brahma Rakshasa? Well, the divine wants us to return into the cosmic ocean oneness, and this Rakshasa are how we are reminded to not get too comfortable in the dualities of this earthly parallel and get back home. As they say, in the world of classic photography, you cannot develop without the negative. But why separation in the first place? Come the next obvious question. Why should we be separated from cosmic oneness to begin with? At some grand cosmic level, the story we are in is just a divine play, a lila to feel the pangs of love when we are separated from the source. As a great playwright once
said, parting is such sweet sorrow. From the perspective of yoga, the object of sending Rakshasa down to earth is so that we can feel the psychic viruses that would otherwise be like empirical ghost in our mind, hard to pin down and eradicate, hence the path of योग. मतलब जैसे योग का यहाँ पे इम्प्लीकेशन क्या है, तो योग को कैसे हम लोग देख सकते हैं. जैसे कोई एक साधारण अगर जीवन अगर चलते हैं तो वहां से नॉर्मली हम लोग अपना जीवन जी सकते हैं, लेकिन उनसे बाहर कैसे, क्योंकि जन्म होगा तो उनका मृत्यु होगा, फिर जन्म होगा, इसी साइकिल में वो चलते रहेंगे. लेकिन आ, उसको कैसे हम लोग उनसे कैसे हम लोग बाहर आ सकते हैं. और जैसे यहाँ पे रावण को ब्रह्म राक्षस बोला गया क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे. ठीक है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, मतलब उनका ज्ञान वो दैट इज वो इंटरनल वे में उनका ज्ञान ऑलवेज रहता था, ये हम लोग बोल सकते हैं. तो वही है कि वो जब इटर्नल नॉलेज पे वो रहते हैं तो उनसे कैसे जूझा जाए, उनसे कैसे फाइट किया जाए. जैसे हम लोगों के अंदर में ही ये डुअलिटीज है, और जब वो डुअलिटीज से हम लोग बाहर आ जा सकते हैं या आ पाएंगे, तब भी वी कैन गेट राम और दैट ब्रह्म और ईश्वर को तभी पा सकते हैं. और तभी, और जैसे कोई भी आ, एक व्यक्ति जब दूसरे से बिछड़ते हैं तो तब उनके अंदर में वो आते हैं, अच्छा प्यार क्या होता है. तो यहाँ पे देखा जाता है जो प्यार का जो स्टोरी बताया गया, दैट इज विथ राम एंड सीता, दैट इज वो डिवाइन एक लीला है, वो ईश्वर का एक लीला है, आध्यात्मिक एक लीला है. और जब वो लीला को अगर हम लोग सही से देख पाते हैं तब भी सभी कुछ अच्छा हम लोग फील कर पाते. और योग का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, मन से जो दुख है उनको हटाना. जैसे राक्षस क्या है, राक्षस इज हु इज द डाउन टू अर्थ, मतलब वर्ल्डली ऑब्जेक्ट जो है उनके ऊपर उनका आकर्षण होता है, लेकिन वो तो अल्टीमेट नहीं है. ठीक है, वहां से ब्रह्मत्व की तरफ कैसे हम लोग जा सकते हैं, वही अल्टीमेट है. रावण however is no ordinary Rakshas. He is considered a Brahma Rakshas, therefore requires a high level of yoga to eliminate his particular virus. The densate from ignorance stemming from ahamkar, and consequently the greater the rewards of such a practice. तभी जाके उस जगह से कोई एक व्यक्ति को वो हरा सकते हैं. जैसे इसीलिए रावण को हटाने के लिए, रावण इतना स्ट्रांग थे बिकॉज ऑफ मतलब उनके अगर फिलोसॉफी देखते हैं, फिलोसॉफी वाइज तो वो बहुत स्ट्रांग थे. तो वहां से उनको हटाने के लिए या उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए राम को ही आना पड़ा. यस त्रिशा. सर सर जैसे यहाँ पे बोला गया है सर लीला के बारे में, तो सर लीला क्यों है सर? लीला इज जैसे यहाँ पे यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है, एक व्यक्ति या साधारण रूप से अगर हम लोग रहते हैं
तो नॉर्मली क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनका कुछ उदाहरण हमारे सामने नहीं होता है। तो साधारण कोई एक व्यक्ति के लिए अगर कुछ उदाहरण के तौर से दिया जाता है, तो ये सब कुछ बहुत इजीली हम लोग समझ पाते हैं। तो राम का ये जो स्टोरी है, तो इसमें एक ये उदाहरण है कि राम जो खुद ईश्वर है या भगवान है, लेकिन वो एक साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं, उनका कुछ मैजिकल पावर नहीं है, और वो आ, खुद खुद को जान रहे हैं, और जो भी बाधा है, विघ्न है, उनसे सभी से वो खुद को बाहर लेके आ रहे हैं। दैट इज इसीलिए इनको बोला जा रहा है लीला, कि वो दिखा नहीं रहा है कि वो क्या है, बट ही इज वर्किंग और ही इज स्टेइंग देयर एज ए कॉमन पर्सन और कॉमन मैन, और वो ईश्वर लेकिन वो खुद ईश्वर है। सभी आके उनको बोल रहे हैं कि आप ही तो सबका मालिक हो, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, आई एम ए कॉमन पर्सन। और उसमें देखा जा सकता है कि वो भी पूजा कर रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं कि वो युद्ध में वो विजय प्राप्त हो जाए। तो ऑल दिस थिंग्स इज देयर बिकॉज ही कंसिडरिंग हिमसेल्फ एज ए कॉमन मैन। तो इसीलिए ये लीला यही है कि दिस इज ए डिवाइन प्ले, कि वो अगर नहीं करते हैं तो कॉमन पब्लिक वो यही सोचेंगे कि अच्छा मैं ही मैं सुपर हीरो हूँ, या भगवान भी कोई आके कुछ भी उनको हेल्प कर देंगे। भगवान खुद दिखा रहे हैं, नहीं, मैं भगवान होते हुए भी मैं मेरा हेल्प नहीं कर पाऊंगा अनलेस अंटिल आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ। इसीलिए राम जब रावण के साथ जब युद्ध होता है, प्रॉब्लम किसी के लाइफ में भी हो सकता है, लेकिन वो युद्ध करना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वहां से फिर आ, मतलब टर्न करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, having done backstory, we now look at the original storyteller Rishi Valmiki and how he comes upon this entire script. The Bandit. Rishi Valmiki is considered as the first composer of Ramayana. Before Valmiki became a rishi and composed the Ramayana, he is living the life as a bandit or rovering onward passerby in the forest. He takes the loot from his raids back home to his family, who's eagerly await his return every day to enjoy the fruits of his effort. One day, Bandit attempts his nefarious deeds on the great Rishi Narad, who stop him in his tracks by posing him a very profound question, karma of a bandit. That is, Narada asked Bandit or that Dakat whether his family that share all his load will also share his karma. The Bandit is taken aback by his pressing question and deeds to take back home empty hand for once. The Bandit inquires from his family whether they will share in his karma, but they refuse, saying that it is his dharma as a provider of the family to take care of them, but they certainly will not share in his karma. The Bandit is devastated by his relevance and returned to Rishi Narada and asking for advice, and he is now completely delusional with his life. And this is the ultimate, कि कोई एक व्यक्ति कुछ भी करके वो अपना पैसा वो जमा करते हैं, जैसे ये वो उस टाइम पे वो डकैत थे, तो किसी भी करके वो पैसा लेके वो घर में जाते थे, उनका माता पिता या
सभी का वो पालन पोषण करने के लिए। तो जब जाके पूछा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो गलत कर्म है, तो क्या आप लोग इसका कर्म फल लोगे? तो वो लोग तो सामने ही बोल दिया, नहीं, हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका कर्म है, आपका धर्म है कि आप हम लोगों का टेक केयर करें या आपका हम लोगों का पालन पोषण करें। ये आपका धर्म है, आप कैसे उनको लेके आ रहे हो? एंड दैट इज द अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। One story. The Bandit says the very opposite of his personality. So he asks Narada, who is the most perfect human on earth? And he gives him a list of amazing qualities, of which Narada, of course, details Ram. This is what we mean by an avatar, a perfected descent of divinity in human form. The glories of his being so capture the Bandi that he goes into deep meditation. Another story. Narada asked the Bandi to sit meditation on the mantra Ma Ra because he is unable to say Ram. So that's why Narada asked him to recite Ma Ra. You may have heard that Guru usually gives personalized mantra to their students, uh, specifically tuned to their particular nature. In this case, the sound Mora means he is dead, who is, which is a very appropriate mantra for psychology of 100 bandits. The bandits sit immersed in the meditation on this mantra, Mora, Mora, Mora. In either case, the bandit is so deep into meditation for so long that an ant hill grows around him and hence his name Balmiki. मतलब वो छोटा छोटा क्या बोलते हैं ऊई, जो इन बंगाली, तो उसका एक ढीपी बन गया, तो इसीलिए उनका नाम है वाल्मीकि, द ऋषि वाल्मीकि. The name Valmiki means one who is form of ant hill. Valmiki in Sanskrit. At the psychological level, the old bandit dies in the sense that he loses his previous identity deep within him. Mantra also resonate with the sound Rama, Rama, Rama. You can in infer from these two simultaneous effects that must have been his transformation. He completely drops his Bandit identity, and the new Balmiki now totally resonate with Rama. The power of Balmiki's mantra meditation result in moksha, in the sense of freedom from his old life, and the story of Ramayana spirit forth from within him in beautiful poetic verse. And now we take a dive into what must have been the yoga practice of Valmiki. Yoga of Valmiki. Valmiki कैसे practice करते थे? The ant hill that surrounds Valmiki, symbolic of having our ear tuned into the earth element. Not note how the ant hill is shaped like a cone through which one can listen deeply. Fundamentally, Valmiki goes through a process of deep psychic cleanliness called Bhuta Suddhi through each of his chakra energy enters. Bhuta Suddhi means purification of 5 elements, Bhuta, that make up the material universe.
This can be done through meditation practice. Combine pranayama, bij mantra, and visualization. The bij mantra are forced on the first five chakra in the tantric system because the subsequent two are considered in the transcendental realm. The bij mantra found in Ramayana also have parallels to the physical geography of the story and trace the chronological outline of story too. When turns the map to start from Lanka, then to the waters separating Lanka, then on the bridge that connects the mainland, then we are in Ayodhya, where the prince and born in Yajna ceremony and come back all the way to Valmiki's ashram, where the story is written. This is a very evocate way to describe the Bij mantra that we can tap into for our own practice. Okay. जैसे ये जो बीज मंत्र राम, ये जियोग्राफिकली भी बहुत सिग्निफिकेंट है। क्यों? जैसे जब ये स्टार्ट होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? लंका जाते हैं। और जो लंका क्या है, वो पानी से अलग होते हैं, ठीक है। और जब वो मेन लैंड से वो कनेक्ट होते हैं, तब वो अयोध्या पहुंचते हैं और तब वहां पे एक प्रिंसेस का जन्म होता है और उनका नाम है, और जैसे बोला जाता है कि रावण का ही पुत्री है, मतलब सीता कोई एक, और वहां से ही तभी ये बोला जाता है कि बीज मंत्र वहां से ही सब कुछ उत्पत्ति होता है। और तब वहां से फिर यज्ञ सेरेमनी से फिर वो आते हैं वाल्मीकि के आश्रम पे, और जहाँ पे ये स्टोरी लिखा जाता है। इन द सेंस द फाइव एलिमेंट्स दैट मेक अप द फिजिकल यूनिवर्स कुड बी viewed as आकाश with the बीज मंत्र होम। The base is which story starts is, of course, the original yajna, which the mantra emerged from chanting in the throat. The chakra in the throat region is called Vishuddhi, literally the purifier of all energies in the space. Bij mantra, whom denotes the purification power of Homa, ritual offering to Devas, conducted by Drashta, the earthly father of Rama. Dasaratha, sorry. Conducted by Dasaratha, the earthly father of Ram and his brothers. The Home mantra is known to shatter the veil of ignorance that involve us when, as a baby, we exist. The Om, mastery over the chakra, gives us power to transform the world as a sound, inspiring speech is the most powerful energy we can evoke. This is why Shiva, too, the ultimate energy transformer, is known as the blue throat Nilkantha, who purifies all the poisonous that arise in existence. तो थ्रोट में रहते हैं आकाश, और उसका बीज मंत्र है होम, ठीक है। और वो बोला जा सकता है कि वो प्यूरिफाई करते हैं। दैट्स व्हाई दैट इज वी कैन से इट्स ए विशुद्धि चक्र। देन वायु, द बीज मंत्र यम,
The good wind which blows in Ayodhya, literally a place of no were epistomized when human a Hanumana opens up his heart in the place and shows Ram and Sita resides within him. The Buij mantra Yam denotes the feeling of love like yummy feelings. The chakra is in the heart region is called Anahata, literally unstruck sound, meaning the place of creating intention without the need to articulate it. Mastering this chakra gives us power over relationship and the ability to understand and correctly discriminate the energies of beginning around us. That is the Vayu Bij Mantra Yam. That is in Anahata Chakra. Agni, the Bij Mantra Ram, the fire of devotion by which is backed all the breaks that span the bridge taking the armies into Lanka. The chakra is navel region called Manipur chakra. The Bij Mantra Ram is inspired by our protagonist Rama, who is corresponding uh, descends from the solar density of Surya. So when these armies are building a bridge of bricks and stones from the mainland to Lanka, each brick is engraved with the sound Rama and the fire with Agni. Mastering this chakra gives us the energy we need to accomplish our earthly purpose without fail. That is the main things of Agni. Okay. Or Rama Bij Mantra, that is which is in our navel region. Then Jala with the Bij Mantra Vayam, Bhum, Bhum. The waters loaded over by Varun, which needs to be crossed by the armies. The chakra in the abdominal region is called Swadhisthana, literally self-dwelling place. The Bij mantra Vum denotes Varuna, the deity who preside over the body of water that separates Lanka from mainland. Splashing around in the water are the most sensual beings called Apsaras, derived from Apa, another name for water, responsible for distracting many a rishi from their spiritual journey. Mastering their chakra let us not get swayed by the fluid elements of all our sensibilities. That is Jal, जो शरीर से ultimate, and then Prithvi with the Bij mantra Lum, the earth element which separate, which is epitomized by the sensual paradise of the Lanka itself, in which Sita finds herself immersed. The chakra in the base of the spine called Muladhara, literally the root support. The Bij mantra Lum denotes Lanka itself, where having lost the love of her life, Sita indulges in only bare minimum to eat and sleep.
in the order to just keep functioning until she is rescued by Ram. Despite the famed island of Lanka was known for its beauty, where all its citizens enjoyed unlimited sensual pleasures. Mastering this chakra let us stay grounded is base pleasure like food and sleep that not that nothing shakes us. मतलब ये पूरा एक सिग्निफिकेंट है कोई एक व्यक्ति का चक्र का जागरण ये पूरा रामायण का स्टोरी के साथ ये हम लोग देख सकते हैं सीता कौन है वो इज द कूल कुंडलिनी और वो कहाँ से जाएगा वो स्वादिष्ठान से होते हुए स्वादिष्ठान मतलब जल दैट इज जो स्वादिष्ठान चक्र वो उसको जल से रिप्रेजेंट किया गया और वहां पे जब ब्रिज होता है वो फिर जाके राम से मिलते हैं और राम फिर धीरे धीरे अनाहत से होते हुए वो मतलब जंगल के रास्ता से वो फिर मतलब उनको मन में बसाते हुए वो जाते हैं विशुद्ध चक्र से तक मतलब अयोध्या अयोध्या मीन्स दैट इज इन आवर नेक रीजन और वहां से फिर सहस्रार से पहुंच जाते हैं आज्ञा से होके बियॉन्ड द एलिमेंट्स ऑफ कोर्स वी ऑलवेज include Om and a point of silence as a part of any meditation. The Anka Chakra in the forehead region is called and is beyond material elements like earth, water, fire, and wind space. Bij mantra for this is Om, the most fundamental sound. Om symbolizes the sound of creation of this whole story. Okay, the Rishi chants Om, and thus they became aware of the past, future, the cause and effect of happening in our world. Valmiki is the author of the story, opens up his Agga Chakra like all rishis and became fully aware of the story in order to write it while sitting in his ashram. We too often meditate on the chakra and become aware of the cause and effect of action in our lives and gain control over their seemingly incessant motion. We understand that cause of Rakshasa lies within us and our action can create an effect on them too. When we gain mastery over all this chakra, we too became a rishi and write our own story, thus fulfilling the purpose of ourself on earth. We don't need to personally write an entire new Ramayana in order to become a rishi. We just need to understand existing version and map it to fit our life, which is one reason why there are so many later versions of Ramayana, although Rishi Valmiki is considered to be the original authentic story. Okay, so that is the all about Ramayana. This is the main essence of Ramayana. ठीक है आज शायद सभी का इंटरनेट में थोड़ा इशू है तो एक बार सभी इसको एक बार देख लेना एंड टुमारो अगेन विल डिस्कस ओके सोमेंदु हाँ सर ये तो पूरा ही माथे के ऊपर से गया सर त्रिशा স্যার বলছিলাম যে আমরা ঋষিকেশ থেকে কখন ফ্রি মানে ফিনিশ হবে কখন স্যার